Chitral, a land of breathtaking beauty nestled in the Hindu Kush Mountains, faces an unseen battle. Its towering glaciers, once a symbol of stability and life, have now become harbingers of disaster. Glacial lake outburst floods and flash floods have brought devastation to the region, threatening lives, livelihoods, and the delicate balance of nature. Glacial lake outburst floods, or GLOFs, occur when the walls of glacial lakes collapse, releasing massive volumes of water downstream. In recent years, rising temperatures have accelerated glacial melting, creating unstable lakes across the Chitral region. Flash floods, triggered by sudden heavy rainfall or the bursting of these glacial lakes, wreak havoc on villages, farmland, and infrastructure, leaving behind a trail of destruction. Chitral has experienced a significant rise in such events, with devastating floods displacing thousands of families and washing away bridges, homes, and fertile land. The impact of GLOFs and flash floods on Chitral's local communities have been devastating. The destruction has disrupted human life at multiple levels, pushing the region to the brink of crisis. When flooding occurs, the main highways are obliterated at multiple locations, temporarily cutting off Chitral from the rest of the country. Power distribution lines, drinking water pipelines, and irrigation channels are destroyed, leaving residents without clean water, electricity, and critical irrigation for crops. Entire families have been rendered homeless, their belongings and homes swept away in a matter of minutes. Communities have shown remarkable resilience, providing shelter and food to the displaced, but the scars of loss remain. The health crisis caused by floods cannot be ignored. Contaminated water has heightened the risk of diseases like diarrhea, cholera, and typhoid, while stagnant waters increase the threat of dengue and malaria. The psychological toll is equally severe. Many flood victims are at risk of post-traumatic stress disorder. हमारे रीजन में घाघूच में सैलाब आया था, जिसकी वजह से हमारे एरियाज़ में काफ़ी दुश्वारियाँ आई थी, क्योंकि वहाँ एक प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं मौजूद, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का एक ज़रिया नहीं मौजूद। जो रोड नेटवर्क हैं वो काफ़ी खस्ता हालत में हैं। उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रांसपोर्ट में इशू बना था, जिसकी वजह से शहर के अंदर जितनी भी नेसेसिटीज़ थी उनमें कमी पेश आई थी और काफ़ी टफ हफ्ता गुजरा था, और कोई कंटिजेंसी मेजर नहीं बनाया हुआ था हुकूमत ने कि ऐसे चैलेंज को फेस किया जाए इतने हार्श इलाके में। और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एक नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है, और वहाँ पे बिजली के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि मतलब हर सैलाब के बाद जो है ना हफ्तों तक बिजली नहीं होती, और वहाँ पे पानी का प्रॉपर कोई सप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग पानी यूज़ करते हैं वो बेसिकली स्प्रिंग वाटर होता है, और जब सैलाब आता है तो वो सारे बंद हो जाते हैं, और उसकी वजह से लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ फेस करनी पड़ती है। बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, और मतलब रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और लोग फिर वहाँ पे जो है ना टेंट वगैरह में रहना शुरू कर देते हैं जब तक उनका प्रॉपर घर वगैरह नहीं बनते। चित्रारा हन की हाय वो तबाही बोयान रोयन ते बिजली मसला बोयान वो मसला बोयान अतसम सैलाबी रेलो वजह रोयन फसल ज़मीन और माल मवेशियन बहुत तबाही बोयान है वजह रोयन फसलों तो नुकसान बोयान और हेतन ज़रिए माश कमी गोयान हेरार अलावा ऑलरेडी हेस पसमंदा इलाका भी को वजह हेरा रिसोर्सेज कमी बयान है सैलाब की मज़ीद हेतन मुसीबतन बढ़ाया गोयान Mana muiz awa erar bunyar biko bunitu kya time ki honge en ate time spa life बहुत ज़्यादा effect ben spara mahban bunen ate wajahen spa ki shapi ko supply ben या खो क्या schnaren के की supply ben basic necessities an ase बहुत ज़्यादा effect ben biko है परा क्या कि तियो शे हसे दी हार्स तनारे biko transportation दी बहुत ज़्यादा effect ben atera ate wajahen रोई ता कर्म बचे खुर इलाकान तन biko no बनिया। मेरा नाम जैस्मिन अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ चित्राल के गांव बूनी से है। असल में मैं आज आपको जो है चित्राल में जो सैलाब आते हैं उनके बारे में बताऊंगी। चित्राल में सैलाब हर साल आता है और उस वजह से लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, और उन मसाइल के साथ उन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना सबसे बड़ा मसला होता है। At the heart of Chitral's flooding crisis lies climate change. Rising global temperatures have accelerated glacial melt, creating unstable glacial lakes that are prone to bursting.
Overgrazing of livestock, particularly goats, has stripped Chitral's hillside of vegetation. The absence of plants and roots leaves the soil loose and unable to absorb rainfall, increasing runoff and intensifying the floods. Deforestation, unplanned construction, and inadequate drainage systems further exacerbate the situation, leaving the region vulnerable to GLOFs and flash floods. The government's current efforts are limited. A few cement walls have been constructed to redirect floodwaters away from residential areas and farmland. While these structures provide temporary relief, more comprehensive solutions are needed. At the community level, initiatives such as afforestation can help stabilize the soil and reduce flood intensity. Local farmers can adopt sustainable grazing practices to restore vegetation cover on Chitral's hillsides. Investing in stronger infrastructure is essential. Roads, power lines, and irrigation channels must be designed to withstand extreme weather events, ensuring connectivity and resilience for the local economy. By combining community efforts with government support, we can mitigate the impact of floods and build a safer future for Chitral. The solutions are within reach, but they require collective action and commitment. Chitral's glaciers, rivers, and mountains are not just its lifeblood, they are its identity. But without urgent action, this identity is at risk. Join us in safeguarding Chitral's future, support climate action, spread awareness, and contribute to building resilience in this fragile region.